यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ सरस्वती और आज हम बात करने वाले हैं सीएम फेलोशिप महाराष्ट्र के बारे में। तो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता था, पहले आपने वीडियो बिल्कुल सुना होगा, स्टेप अहेड इंडिया के यूट्यूब चैनल पे ही हमने रिकॉर्डेड वीडियो डाला हुआ था टू शेयर द अपॉर्चुनिटी। तो सीएम फेलोशिप की जो लास्ट डेट थी वो 5 मई थी, जो कि चली गई है। और अभी उसके जो भी स्टेज 1 एप्टीट्यूड टेस्ट, देन बाकी स्टेजेस शुरू होने वाले हैं। तो टू पर्पज ऑफ प्रिपरेशन हमने ये लाइव प्लान किया है विथ फॉर्मर सीएम फेलो। तो हमारे साथ शुभम है। शुभम, मैं आपका स्वागत करती हूँ एंड Yeah. आई एम टेकिंग द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस शुभम। तो बेसिकली शुभम को 6 साल का सोशल सेक्टर में वर्क एक्सपीरियंस है अभी तक, जिसमें उन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर, सोशल सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंड उसके साथ ही गवर्नमेंट अलाइंड इनिशिएटिव्स में वर्क किया है। एंड 21st सेंचुरी स्किल्स के ऊपर भी उन्होंने वर्क किया है एंड 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को उन्होंने इम्पैक्ट किया है। तो अभी शुभम जो है सीनियर प्रोग्राम मैनेजर है मुस्कान ड्रीम्स फाउंडेशन में है। एंड उसके पहले 2019 से 20 के बैच के सीएम फेलो भी रह चुके हैं। तो आप सभी को बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। रिलेवेंट क्वेश्चन जरूर पूछेगा और क्वेश्चन खासकर सिलेक्शन राउंड्स के रिगार्डिंग पूछेगा, ऐसे राउंड हो, एप्टीट्यूड टेस्ट हो या इंटरव्यू हो। ठीक है, बाकी सारा जो भी आपके क्वेश्चंस के आंसर है पिछले लाइव में या फिर हमारे रिकॉर्डेड सेशंस में आपको मिल जाएंगे। तो टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड आस्क द क्वेश्चन रिगार्डिंग द प्रिपरेशन राउंड। So, hi Shubham, I welcome you again, and we can start the session now. Thank you, Saraswati. Thank you. Yeah. Okay. So, moving forward, firstly, we wanted to know about your journey. Like हमारे साथ बहुत सारे एस्पिरेंट्स भी है, वो भी आपसे कनेक्ट करेंगे शुभम। So we wanted to know before journey and after journey of the CM fellowship. CM fellowship ज्वाइन करने से पहले जब आपका एजुकेशन कंप्लीट हुआ तब तक की आपकी क्या जर्नी थी एंड उसके बाद फिर आपके क्या क्या नेक्स्ट मूव्स थे टुवर्ड्स योर करियर। Yeah. Thank you, Saraswati, for asking this and inviting me on this forum. Um, uh, हमेशा खुशी रहती है जब मैं स्टेपाइड इंडिया के साथ में इन माय ओन कैपेसिटी जहाँ पर भी मैं एंगेज करता हूँ। सो या मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की है 2016 में इन इंस्ट्रूमेंटेशन हम्म। इंजीनियरिंग। देन आई परस्यूड almost 1 year job in corporates with Cognizant Technologies as an analyst training. Uh, After that, I prepared for the UPSC for the 2 years. I understood that it's a long journey to take ahead. Yeah. Luckily, and by a little bit of efforts, I got a break into Chief Minister Fellowship of Government of Maharashtra. So मैंने इनरोल किया सिलेक्शन प्रोसेस में, आई थिंक इन द मे ऑफ मे ऑलमोस्ट इन द मे ऑफ द um, हम्म। 2019, Yes. and I joined fellowship in on the 5th September of 2019. And I completed the fellowship in the August of 4th August 2020. So my fellowship is actually exactly in between the COVID time, peace time, and the COVID time that I can definitely see, and I was able to see a lot of things happening with respect to COVID, especially what happened on the ground and what sort of an warlike situation was there. After fellowship, मुझे ये समझ में आया कि my qualification is in engineering, but my experience seems to be building in public policy or social sector development sector में वो थोड़ा थोड़ा shape कर रहा है. And I also had a very interest into the development sector, इसलिए मैंने I decided to go for a little bit of higher studies. So मैंने join किया हम्म। PGP diploma in development management, PGPDM, from Indian School of Development Management, that is ISDM Noida. Yes. um, हाँ। this is generally a almost 11 to 12 month completely residential program, but because of the COVID, we actually did it for half year. So half year was Okay. in the online mode and a half year was in the offline mode. uh, After Okay. there, yes, after ISDM, I joined Pijam Foundation as a project manager. I worked there for 3 years almost, and currently I am with the मुस्कान ड्रीम्स फाउंडेशन एज अ सीनियर प्रोग्राम मैनेजर, जहाँ पे मैं एक इनोवेटर्स ऑफ टुमारो नाम का एक पूरा जो वर्टिकल है उसे हैंडल कर रहा हूँ. एंड करेंटली आई एम वर्किंग ऑन बिल्डिंग 21st century skills of the students using the digital education. This is the broader topic I am covering upon. जब मैं
Pajam mein tha, then I started to sort of look after only 20 schools. But now I do have more than 100 plus schools catering to a 20,000 students and a team of 25 also. Why I did this in the larger context, because iski jo uh, puri whatever the profile I am having currently is because of this Chief Minister Fellowship background. Because I am able to work on the scale, because मुझे वो मेरे पास वो experience है. Yeah, that's all about my journey, Saraswati. थैंक यू सो मच एंड आई होप आपकी जर्नी से बहुत सारे एस्पिरेंट्स को हेल्प मिलेगी जो फ्यूचर में भी ये वीडियो देखेंगे बिकॉज बीइंग अ नॉन सोशल बैकग्राउंड ऑफ एजुकेशन एंड उसके बाद कैसे जर्नी किक स्टार्ट की एंड उसके साथ ही बीइंग अ यूपीएससी एस्पिरेंट कैसे अपने अदर ऑप्शंस भी ट्राई किए दैट इज रियली ग्रेट. Okay, so then let's move forward towards the selection stages. So firstly, we will talk about the aptitude test. तो शुभम जैसे कि कल एंड परसों इनका मॉक होने वाला है एंड देन आफ्टर दैट they have to attempt the exact exam. So what you will give the tips to all the aspirants who are preparing for this fellowship? यस, मेरे ख्याल से पहले एक बार आप सब लोग गो थ्रू द वेबसाइट ऑफ द सीएम फेलोशिप एंड आल्सो फॉर द जीआर, Yeah. बिकॉज वहाँ पे एप्टीट्यूड के लिए जो भी क्राइटेरियाज है वो काफी डिटेल्ड में मेंशन दिए गए हैं. इन 2019 और इवन अप टू द लास्ट ईयर एप्टीट्यूड के लिए कोई गाइडलाइंस एज सच दिए गए नहीं थे. दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट द गाइडलाइंस हैव बीन published. उसमें मेरे ख्याल से there are 4 to 5 sections if I'm not wrong. So first sections is around general knowledge carrying 30 marks, reasoning around 30 marks, English language around 10 marks, Marathi language around 10 marks, information technology 10 marks, and quantitative aptitude for 10 marks. Um, and then mostly it will be conducted in 60 minutes and there will be 100 questions. For now, at least for now, वहाँ पे कुछ नेगेटिव मार्किंग है ऐसा तो कहा गया नहीं है. This is what I can see clearly on the website. However, please check from your side in the GR whether it is mentioned or not. But considering it is a 60-minute test, I don't think there is a hardly there is any negative marking. Number one. Number two is that as there is no negative marking, make sure that you are at least taking all the 100 options. Obviously increases your probability getting some of the higher marks even if you are not able to complete the paper. Number two. Number three is that attempt all the questions no matter what happens, because as there is no negative marking. But keeping that in mind, you will have to be very very mindful around time component. उसे mindful रहना बहुत important रहेगा, because ये बहुत important है कि कि आप टाइम को काउंट रखते हुए ईच क्वेश्चन को आप जो समय देना चाहते हो या और इवन जस्टिस देना चाहते हो वो आप दे सकोगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आपने पहले बहुत स्लो पेस पकड़ा, मिडल में यू आर स्लो, सो इन द एंड यू वोंट हैव मच टाइम टू बेसिकली अटेम्प्ट दोस Yeah. क्वेश्चन. एंड सर्टेन टाइम्स देयर आर डिफरेंट स्ट्रेटेजीज फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो, दैट वो पहले जो क्वेश्चंस है दिस विल बी बिट हेवी एंड टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस, आफ्टरवर्ड इट कैन बिकम लिटिल बिट इजी आल्सो. सो देयर आर ऑल द पॉसिबिलिटीज हैपनिंग अलोंग. सो टाइम का जो मेरे ख्याल से एक Mhm. स्ट्रक्चर है उसे आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए. प्लस दिस ईयर वहां पे ऑलरेडी अच्छा खासा कंपोजिशन दिया गया है. मोस्टली क्वेश्चन जो आएंगे वो मिक्स आएंगे, बट यू एटलीस्ट नो कि कौन से क्वेश्चंस कहाँ तक आ गए हैं. सो यू कैन प्ले अराउंड योर स्ट्रेंथ. सो इफ यू आर समवन हु हैज ऑलरेडी डन द कैट का एग्जाम एंड ऑल, और इवन आप लोगों ने यूपीएससी एमपीएससी इन सब चीजें अगर दी गई होंगी, आई थिंक एप्टीट्यूड वाला पूरा more, स्टडी yes, किया है yes, तो exactly. So there are 50% of the portion which you already know mostly. और कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम अगर आप दे रहे हो, उसका कोई भी प्रिपरेशन किया हुआ है, आई थिंक all the marks are in your hands. There is nothing much that which is out of your reach, right? दो तीन sources है जो मैं cite करना चाहूंगा, but these are again, even we don't know what sort of an level they are going to ask. हमें नहीं पता है. जस्ट सम रैंडम रेफरेंसेस जो आपको हेल्प कर सकते हैं शायद, ऐसा मुझे लगता है. हाउएवर दिस इज कंप्लीटली डिस्क्रिशनरी टू माई सेल्फ, जहां तक मैंने इस तरीके की एग्जाम्स पहले दी गई है, राइट. या फॉर जनरल नॉलेज और समथिंग, आई थिंक ईयर बुक्स आर देयर. सो शॉर्ट ईयर बुक्स आप थोड़ा सा देख सकते हो. रिसेंटली करंट अफेयर फ्रॉम द लास्ट क्वार्टर विल हेल्प यू अ लॉट विथ रिस्पेक्ट टू
जनरल नॉलेज एंड करंट Hmm. अफेयर. देर आर लॉट ऑफ Definitely. बुक्स, Yes. वन लाइनर बुक्स मिलते हैं जनरल नॉलेज के. आई विल रिकमेंड यू टू sort of go through anyone which you find it comfortable. However, it's a vast sea of knowledge. जनरल नॉलेज में वो कुछ भी पूछ सकते हैं. So आपको कितना समय उसमें डालना है, that is something that you are the better judge of, right? Number one. Number Yeah. two is that when there is a quantitative and the section of the reasoning also. Any reasoning book, Uh-huh. however, there is one caveat. जो रीजनिंग आपका जो वहां पे दिया गया है, दिस इज सॉर्ट ऑफ एन डिडक्टिव साइड में बहुत ज्यादा है. सो इट इज नॉट अराउंड डायग्राम्स, इट इज नॉट अराउंड नंबर्स, इट इज मोर अराउंड judging your problem solving ability, judging your a little bit of language skills also, क्योंकि उसमें डिडक्टिव रीजनिंग वगैरह ये सब चीजें थोड़ा सा अच्छे से दी गई है. सो जहाँ पे Yes. सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग, सेंटेंस फॉर्मिंग, उससे कुछ मीनिंग डिडक्ट करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड को आपका चेक करना, इवन केस स्टडीज वहां पे छोटे छोटे केस स्टडीज देना, ये सब चीजें वहां पे आई थिंक दे आर मच मोर फोकसिंग अपॉन दिस ईयर. सो इवन इफ यू, सो रीजनिंग में बहुत सारे टॉपिक्स है. सो मोर फोकस ऑन जहाँ पे सेंटेंस टाइप रीजनिंग टॉपिक्स जहाँ पे है, उसको आप ज्यादा फोकस कर सकते हो, बिकॉज इट इज क्लियरली मेंशन देयर. इफ आई Case कैन studies. सी, यस, यू आई कैन सी वहां पे तीन चार उन्होंने दिया है: डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, Uh-huh. केस एंड इफेक्ट रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग. डिसीजन Yes. मेकिंग के केस में यू कैन एक्चुअली रेफर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ द एमपीएससी, जो कि Yeah. जो आपको मराठी और इंग्लिश It will दोनों में help. अवेलेबल मिल जाएंगे, वो बहुत आपको हेल्प करेंगे. इवन आई विल रिकमेंड यू वहां पे जो रीजनिंग के क्वेश्चंस रहेंगे, दीज आर आल्सो एप्लीकेबल, बिकॉज जनरली एमपीएससी आस्क these all kind of reasonings only. हाँ, But 10, those, 12 level वाला yes, yes, reasoning. Yeah. 10th level wala reasoning, but more on a sentence side. This is one very very हाँ. important thing is. Second thing is around quant, I think goes the same. I mean, जो भी आप करना चाहो, RS Agrawal is something which is very simple, but again it is only for the 10 marks. So कहाँ आपको डालना है weightage, that is also Yeah, you uh, can choose the thing कि कितना exactly. करना है और कितना नहीं करना, या Yes, सिलेक्टिव for, टॉपिक्स कर सकते हैं बस. yes, just for a general knowledge point of view, or just to you want to have a overall राउंड अराउंड द एग्जाम अगर आपको करना है, इन दैट केस आई थिंक लूसेंट की एक बुक मिलती है, जनरली रेलवे एस्पायरेंट्स इसका बहुत यूज करते हैं. आई फाउंड इट वेरी कॉम्प्रहेंसिव फ्रॉम मल्टीपल एंगल्स. सो जीके के लिए दैट विल बी मच मोर हेल्पफुल, एंड सम ऑफ द टॉपिक्स ऑफ एंड क्वांट उसमें एंड आईटी के भी है, मतलब कंप्यूटर नॉलेज के भी कुछ क्वेश्चंस इसमें कवर हो जाएंगे, आई थिंक गाइस. right. ओके. So Lucent will be a good source for the people wanted to sort of do certain things around English or Marathi. There are no standard resources as such, but those who प्रीवियस are well, क्वेश्चन क्वेश्चंस ऑफ द एमपीएससी अगेन, आई थिंक. rather than this, Bala Sahib Shinde का एक book आता है, especially ओके. from the English and Marathi point of view, which can cover in depth. Uh, वो एक डेप्थ आपको मिल जाएगा वहां पे करने के लिए. हाउएवर इट इज वेरी सब्जेक्टिव कि आपको किस तरीके से कितना डेप्थ में जाके इसके लिए प्रिपेयर करना है, राइट? Yeah, that's mostly around MCQs, the first stage of the exam. एक चीज मैंने जो चेंज दिखा है इस साल, and which is very significant if you see from a selection point of view. Before this, there was no weightage given to the uh, round one for the या. final selection. मुझे याद है मेरे टाइम पे the round one was only a for a eligibility sort of a thing. It was just for to get the candidates, to get the best candidate in the front only. इस साल 30% weightage is also given to the test, initial test. So you have to keep in that mind. The more you will get a grip on this test, the chances of selection will be amplified. So selection in this test is also very very crucial. Uh, the essay writing and the interview will have a weightage of 50 marks. So if you can यस. observe here, essay writing के लिए 20 marks है and interview के लिए 30 marks है. So interview and this test has actually an equal weightage, which is very significant change from the last year. Otherwise it used to be mostly around interview, rather even around your essays. This is what the general understanding we had at that time among the aspirants. Yeah, over to you, Saraswati. ओके. So we will take few questions, Shubham here.
and then we'll move forward towards the essay strategy. So, yeah, one question, व relevant question आदित्य पूछ रहे हैं कि क्या ये एग्जाम मोबाइल से दे सकते हैं? Mostly don't give through mobile, use laptops Yeah. or something, because मोबाइल का प्रॉब्लम ये होता है कि ये अचानक से इंटरप्ट हो जाती है, कुछ कुछ चीजें आपको कॉल आ जाएगा एंड ऑल, एट दैट टाइम जनरली एमकेसीएल टेक्स केयर ऑफ कि ऐसे कुछ अगर ग्लिचेस भी होता है, बिकॉज मेरे ख्याल से इसका टेक्निकल पार्टनर जो है एग्जाम लेने के लिए इज एमकेसीएल टेक्स केयर ऑफ these things. But again, I hope you don't want to take any chances, or you don't want to have any disruptions when you are actually Mhm. giving the exams, right? This is very critical, I will say. So अगर आपके पास में लैपटॉप वगैरह नहीं है, go to cafes and all. I think that should be sufficient. Yeah. Yes. एंड इवन आई विल शेयर फ्यू थिंग्स लाइक उस टाइम पे क्योंकि सभी लोग एग्जाम दे रहे होते हैं तो इट माइट बी पॉसिबल कि सर्वर का कुछ भी एरर हो या फिर आपकी जो एग्जाम है बीच में स्टक हो जाए तो डोंट टेक चांस जस्ट गो टू साइबर कैफे और बोरो समवन्स लैपटॉप और whatever do whatever you can do but prefer कि लैपटॉप या कंप्यूटर से ही आप टेस्ट ओके so let's move forward towards the essay round. तो ये शुभम द एज वी नो कि जो कोई एप्टीट्यूड में क्वालिफाई हो रहा है उसको एसए का जो है ईमेल आता है तो यूजुअली एसए राउंड में जो टॉपिक्स होते हैं वो किस तरह के टॉपिक्स होते हैं अगर आपने कहीं आपके टाइम पे भी आपको कुछ टॉपिक मिले होंगे एंड देन उसके पहले उसके बाद भी कुछ फेलोज को मिले होंगे so you can share the thing, the topics and do and don'ts, how they can prepare and how they can write and mostly most important chat gpt का कैसे यूज कर सकते हैं या उसको अवॉइड कर सकते हैं. Yeah. Um, so I will first talk about the nature of the essays. In my time, so even me, मुझे भी fellowship खत्म करते हुए 5 years हो गए, but I think they have repeated the pattern this time, that they will provide a Mm-hmm. list of topics and you will have to write a essay on that given topic. ऐसे नहीं रहता है कि आपको कहीं पे जाके उसे essays को लिखना है. You will be given a stipulated window of 2 to 3 days to submit your essays. So आपके पास में टाइम रहता है कि Okay. आप ऐसे का टॉपिक पहले चूज कीजिए, उसे अच्छे से लिखिए, उसे अच्छे से आर्टिकुलेट कीजिए, and then you basically upload it on the portal. So you do first thing in your mind, you do have a sufficient time to basically write your essays, and you don't have to write the essays in a real time. You have to submit the Mm-hmm. essays within a stipulated period of time. That's a one understanding. Second thing is that I think the topics of the essays कैन बी अ लिटिल बिट रैंडम. जैसे मैंने पिछले साल के जो फेलोज थे उनसे पूछा था, एट दैट टाइम देयर वर 5 क्वेश्चंस दैट Mm-hmm. दे वर सपोज्ड टू आंसर, एंड इट वाज certain questions were even personal also. But I think considering this year they are giving you only one topic to write, mostly it should be around broader policies, especially focusing on Maharashtra. I remember during my time there was they have asked specifically around agricultural policy, tourism policy, even the Mm-hmm. tech policies, e-governance policy of the Maharashtra. Some of the topics like reforms क्या आने चाहिए government में, what is your imagination with respect to that. Some topics were deeply also ingrained with the economic potential of the Maharashtra, जैसे magnificent Maharashtra, magnetic Maharashtra and all. These were some of the campaigns that government of Maharashtra is running since a long time. What's your sort of an inputs on that? क्या इम्पैक्ट उसमें से क्रिएट किया हुआ है. सो आई थिंक द मोस्ट एसेस टॉपिक्स इज अराउंड दी focused on Maharashtra and Maharashtra's overall socio-economical, political um, Yes. sense. I think this year they might um nudge you to write more toward the technology adoption of the Maharashtra government, Mm-hmm. towards the e-governance or overall use of the technology into the governance or in Yes. the administrative structure. You don't Second third thing is that you don't have to prepare very exclusively for the essays, as far as I am seeing, because जब topping आएंगे तब आपको you might have to बर्न द मिडनाइट ऑयल, तब आपको बहुत प्रिपेयर करके वहां पे एसेस को अपलोड करना होगा. फोर्थ थिंग, सरस्वती, विथ रिस्पेक्ट टू चैट जीपीटीज and use of chat gpts and all, Yeah. I think in my personal opinion chat gpt is a good articulation tool, कि आप खुद से लिखिए, इंफॉर्मेशन को अच्छे से गैदर कीजिए, खुद से लिखिए, खुद से Yeah. एक्सप्लोर कीजिए,
and then you use ChatGPT just for a articulation purpose. Mm-hmm. But nothing more than that. This is what I will suggest, because understand, everybody is going to use ChatGPT. What will Yes. stand you as an, you, where your aces will stand out is basically, have you uh, used your analytical mind? क्या आपने सच में आपकी जो तार्किक बुद्धि है या फिर चिकित्सक बुद्धि है, क्या आपने उसको वहां पे परखा है? क्या आपने खुद के भी कुछ ओपिनियंस को एक्सप्रेस किया है? uh, Mm-hmm. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डू यू हैव दैट मेच्योरिटी टू understand the grasp of the entire topic also, right? So I think Okay. ChatGPT can help you here and there in terms of information gathering, in terms of the secondary research, but essence will lie only with you, because एक आप समझ हाँ. लीजिए, intelligence is something which needs to be judged. Your intelligence should be judged, not artificial intelligence should be judged Yes, while writing the exam, right? definitely. It's a very tricky thing that you can do, because one of the very important thing जो आपको मैं highlight करना चाहूंगा, there, I mean, all the fellows who have gone through the interview procedure and have been selected, they have shared one common perspective is that उनके इंटरव्यू जो थे वो बहुत बार उनके एसेट्स के ऊपर भी बेस्ड थे. I personally had Yeah. written around agricultural policy of the Maharashtra, and I was coming from the Vidarbha belt of the Maharashtra, where the farmer suicide was an issue and it still is an issue. तो उन्होंने मुझे कहा था, and I wrote actually essay on the agricultural policy of the Maharashtra, and they actually asked at least I remember 2 to 3 questions around the agricultural policy of the Maharashtra, and specifically toward the farmers suicide, right? सो Hmm. आपको इन कॉन्टेक्स्ट को थोड़ा सा Yeah. ध्यान में लेना है. प्रिपेयर बाय योरसेल्फ, पुट योर डेटा, यूज चैट जीपीटी जस्ट फॉर द रेफरेंसेस हियर एंड देयर. However, use it as an articulation and a data gathering tool. Express your opinion, express your findings, express your research into your findings. Yeah. Okay. So few things I will also add. So basically, for the data gathering, you can use the authentic reports, Yes. websites, and all those things. जो भी मेन गवर्नमेंट के रिसोर्सेस है उसी को यूज करना है या कुछ और ऑथेंटिक हो उसी को. चैट जीपीटी हो सकता है आपको कुछ पास्ट डेटा दे. एग्जैक्ट डेटा अभी का रिसेंट डेटा आई डोंट थिंक वो आपको प्रोवाइड कर सकता है बट यू कैन क्रॉस चेक इवन. एंड अनदर थिंग इज कि आपको तीन जैसे शुभम ने कहा कि आपको 3 से 4 दिन का आई थिंक टाइम मिलता है. तो व्हाट यू कैन डू कि डे वन से ही आपको आपका ड्राफ्ट रेडी करना शुरू करना है एंड देन सर्च करना भी रिसर्च करना भी. क्योंकि ऐसे बिल्कुल भी मत करना कि 4 दिन का टाइम है लास्ट डे कर दूंगा ऐसे ही तो है. सो डोंट टेक दिस इन दैट वे. सो डे वन से ही आपको पूरा जो ड्राफ्ट है वो शुरू करना है. डे वन पे आप अपना पर्सनल ड्राफ्ट लिखिए, दूसरे दिन रिसर्च कीजिए, फिर डेटा और बाकी सब फैक्ट्स उसमें लिखिए. रेफरेंसेस भी आप नीचे डाल सकते हैं जहां से आपने वो डेटा और बाकी सब चीजें लिखी है ताकि आपके जो एसे को है और थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए. You can एंड use या the budget economic survey of the Maharashtra. या So budget के पहले भी खुद का महाराष्ट्र का भी economic survey जो है produce होता है, right? So you can refer to that. Then there are third, reach document repository is present with the government of Maharashtra, specifically Department of हाँ. Economic and Statistics का अगर आपने website. So basically entire fellowship is being directed by the planning department of the गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, एंड उसके अंडर जो डीईएस होता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, दैट कंडक्ट द होल प्रोसेस ऑफ द महाराष्ट्र. सो योर अंडरस्टैंडिंग इज दैट adding an inputs from their resources and their site will hold a value, because they basically know कि कहाँ से आप साइट कर रहे हो रिसोर्स. सो एज मच एज गवर्नमेंट रिसोर्सेज, गवर्नमेंट डेटा पॉइंट्स ही आप हाईलाइट करेंगे, आई थिंक दैट विल बी अ मच बेनिफिशियल. ओके. सो आई थिंक या ऐसे के अराउंड तो सच रिलेवेंट कोई क्वेश्चन मुझे लग नहीं रहा है. सो विल मूव फॉरवर्ड एंड ओके अबाउट द इंटरव्यू. सो शुभम, दिस इज अनदर बिग सेगमेंट एंड इंटरव्यू में क्योंकि पैनल इंटरव्यू होता है मोस्टली. लास्ट टाइम मुझे जितना याद है उन्होंने ऑफर किया था कुछ ऑनलाइन इंटरव्यूज भी एंड ऑफलाइन इंटरव्यू भी आई थिंक. तो आप अपनी जर्नी भी शेयर कर सकते हैं इंटरव्यू की जब आपने इंटरव्यू दिया था तब का क्या सिनेरियो था एंड अब आप कैसे सोच रहे हो कि कैसे प्रिपेयर करना चाहिए स्टूडेंट्स ने.
I think interview holds 30 mark segment. However, still, I mean, the amount, उसका जो weightage है वो थोड़ा reduce किया गया है. But I think that will give you an Mm-hmm. definitely a very important age, and without an interview you won't be able to pass the overall structure. This is what I think I can definitely say. Number one. Number two is that जो लोग इसी के लिए एलिजिबल हुए हैं और जिन्होंने इसे सबमिट किया हुआ है, ऐसे 210 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए दे विल कॉल आउट, राइट? दिस इज अ वेरी Mm-hmm. इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन एंड नंबर्स दैट दे हैव प्रोवाइडेड. Generally they used to not provided these numbers. Now you know, it's a 210 candidates will be definitely called out for the essay round, and those who have submitted the Mm-hmm. essay, those only who will be eligible for the interview. So please make sure that you are submitting an essay, because then only you are being eligible for the interview. Second thing is that interview जो है, I think this time this will be happening in a physical settings only. I think in Mumbai only these interviews will be happening. Face to face interview, generally a panel of 3 to 4 important officials from the Department of Economics and Statistics, DS के कुछ officers, also the fellowship coordinators. Also IIT Mumbai has recently be will is going to be a knowledge partner for this entire initiative, so you can expect some of the panel members from Yes. IIT Mumbai also. So I think this time it will be a comprehensive panels. This is what the panel is consisted of. All the people are senior professionals. जितना आपका age रहेगा, उतना उनका experience रहेगा. So Yes. now you can understand the depth of, and they are No, basically no, sitting no. on the topmost positions with respect to the government of Maharashtra, or even in their academic journeys, right? So Mm. interview will be a very serious affair that you will need to carry upon. um, a general interview can range anywhere from 15 minute to 30 minute, जहाँ तक हम लोगों ने उस वक्त experience किया था, and I think previous fellows Mm-hmm. also had the similar experience. The questions are more around uh, checking your personal capabilities basically, rather than your any technical knowledge, right? So अगर आपको लगता है कि मैं बहुत सारा पढ़ के जाऊंगा, I don't think so that will be much beneficial. अगर आपको पढ़ के ही जाना है तो I think your topics around your own essays Mm-hmm. is something that will be most relevant. And also अगर उन लोगों ने कुछ CV वगैरह आपसे वो मांगेंगे पहले भी, so whatever you are putting into the CV will be a most relevant questions for you. One common observation is that आपका जो जो भी experience वहाँ पे रहता है, generally you are at the age of 26, you won't have a एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 2 इयर्स जहां तक मैं देख पा रहा हूँ. सो आप 2 इयर्स में आप आपका काम कैसा था, उसका नेचर क्या था, क्या डेडिकेशन के साथ आपने काम किया था, ये सब चीजें वो Mm-hmm. थोड़ा सा इन डेप्थ देखना चाहेंगे. One thing which I have observed very very exclusively, and I would like to address that, there are some non-Marathi people whose speaking language might not be Marathi in a very regular affair, but understands Marathi really well. They can speak a little bit. वो लोग अगर सिलेक्ट हो रहे हैं, they are getting selected because of their domain expertise, number one, and number two, exceptional personalities, Mm-hmm. skills also. They have an excellent working professional. For example, some people are coming from a architecture CA background, so obviously those guys are getting placed into the finance department or somewhere in the Definitely. architecture department like PMRDA, जो rural and town planning में बहुत ज़्यादा relevant है. उनके exceptional academic records है. If somebody is CA, it's a very exceptional academic record, right? And CM Mm-hmm. Fellowship always looks forward to diversified cohort. So it is not like if you have worked purely on an engineering side, still they will be interested in you. So because they need people who can understand, solve the problems, or have a right mindset to understand the complexity of the problem, right? So I think most of your interviews will be based upon your willingness, your skills, compatibilities, and your experience till now, and what are your aspirations, what are you looking at from a fellowship background. How is your background, and they will also check that uh, will you really be interested in fellowship for 11 months, because बहुत बार आपको Mm-hmm. गडचिरोली भेजा जाता है, बीड़ भेजा जाता है, नांदेड़ भेजा जाएगा, and then you never know. Working in these geographies can be difficult for a fellow at certain point in time. Are you really willing to go there and actually complete your tenure in a meaningful fair and in impactful way? So ये वो एक कैपेबिलिटी भी वो आपके साथ चेक करने वाले हैं. As a guide to the interview, I will say nothing as such. I mean, it's just a personality test. The more clearer you are about yourself, your job role,
your strength, your weaknesses, and your essay writing, your topic that you had done for the essay writing, you will be having a very high rate of selection. There is nothing like a perfect interview criteria. These are the things which are the common observations I can definitely tell. Yeah. Okay. Okay. So I think most of the things you have covered during this conversation regarding the preparation and all. So Sweenal is asking about the MCQ test strategy. So uh, मीनल सॉरी स्वीनल प्लीज आप थोड़ा कुछ टाइम पहले का अगर डिस्कशन सुनेंगे तो आपको जरूर पता चलेगा कि क्या स्ट्रेटजी शेयर की गई थी बट अगेन आई विल शेयर विथ यू दैट कि जो आपके क्वेश्चंस है एक बार आई थिंक आप एक बार प्रीवियस क्वेश्चन पे आ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने के बाद शुभम आई I थिंक आ think, yeah, सकते yeah, हैं there is a situation, I think. हो अगर जाएगा. ऐसा है तो जो क्वेश्चंस आप आपसे पहले बन रहे हैं ना उनको आप पहले सॉल्व कीजिए दैट इज रियली बेसिक स्ट्रेटेजी बिल्कुल भी पैनिक करना नहीं है ये क्वेश्चन नहीं आ रहा टेंशन नहीं लेना है ये सब मत करो क्योंकि आपके पास टाइम है ही नहीं वहां पे ये सब सोचने का भी तो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं पहले वो सॉल्व करो उसके बाद जो मिड लेवल क्वेश्चंस है आप उनको जिनको टाइम लगेगा उनको सॉल्व करो एंड देन यू कैन गो फॉर द हार्ड क्वेश्चन इफ यू हैव सम टाइम ठीक है ओके so let's move forward and discuss about the uh, like what are the traits common traits in the selected candidate शुभम like जितने भी आपके बैच में आपके साथ कोहोर्ट था या उसके बाद भी जो कोहोर्ट्स आए हैं आपको क्या लगता है जो लोग सिलेक्ट हुए हैं उनमें कॉमन चीजें कॉमन स्किल्स या एटीट्यूड या माइंडसेट क्या था If I talk about broadly, one thing is quite sure is that they have a good communication skills. Number one, ओके um, that is something which is very much important, and it need not to be um, in English only. I was a purely Marathi candidate. I actually gave my interview in Marathi only, and ओह it actually helped me. So I don't think so. They discriminate a lot with respect to your language. Any language is comfortable for them. But yeah, they will. What they will look after is that do you have a clarity around yourself? What do you wish to achieve? What have you done? What was your educational background? What have you done? And what you wish to do during the fellowship. यही सब चीजें जो है जिनके ऊपर वो आपको फोकस करने वाले हैं, right? Common skills, one is a communication, second one is as far as I see is the problem solving attitude. क्या आप में वो challenges लेने की और क्या problem को solve करने की, उसके root cause तक जाने की वो maturity आपके पास है क्या? Because mostly when you are working with the governments, you will realize that it is so much complex environment when you work with outside the government. Everything looks so easy to look at that, hey ye karna chahiye wo karna chahiye and all. When you actually work with the government, you understand there are so many stakeholders and there are so many conflicting demands, and every demands actually holds a value, right? ऐसे नहीं कर सकते हो कि आप certain demand को आप साइडलाइन करके दूसरे के डिमांड को आप फुलफिल कर रहे हो, राइट? बिकॉज गवर्नमेंट इज ऑल अराउंड मेंटेनिंग इक्वलिटी, जस्टिस, and basically having a equal distribution of the resources to basically thrive an individual, right? So ऐसे वक्त में आपको थोड़ा सा इन सब वैल्यूज को भी ध्यान में रखना पड़ता है. So it's a very complex environment to work with. That's why communication, problem solving, these are the two things. And third thing is that can you go an extra mile in order to achieve, because fellowship is all around that. It's around a fellow to basically stretch his limits and to prove himself that he can actually to do um, out of the box things do out of the box yeah thinking also. And certain times not even thinking, then even an activity also works actions in that regard. Actions आप किस तरीके से करते हो, and remember that you are working with top notch IS officials round the clock. definitely um, they will make sure that आप at least 10 to 12 hours काम कर रहे हो during the fellowships, and you will make the most out of it. That experience is so enriching. okay Even after 5 years, I actually yearn for that experience. मैं उसको अभी भी remember करता हूँ. I actually see them as a guiding light for my present career, you know. So I think communication, problem solving attitude, and getting out of the box, and if not getting out of the box, getting out of your own personal comfort in order to achieve some impact. These are some of the very uh-huh. important traits that you need to follow among yourself. Yeah. ओके सो शुभम अभी आपने मेंशन किया रिगार्डिंग यू वे रिमेम्बरिंग योर जर्नी
So I wanted to ask you, like, how the fellowship helped to, like, shape your career path. Right. I think um, so I come from a very simple and middle class background, and getting Okay. exposure to this level is sometimes very difficult. Though I'm a little bit of privileged, but again, गवर्नमेंट के साथ एक बार इंट्रोड्यूस होना, गवर्नमेंट के साथ काम करना, एंड देन एक्चुअली सोशल डेवलपमेंट सेक्टर के साथ काम करना on a scale in a very Mm. at a very young age of the stage. So I think this is all credit to the fellowship, because what fellowship did is that it actually nurtured some of the critical skills which are required to succeed in your future life. That too in a very timely manner, right? So which are those skills? If you wish to ponder upon, one of the very important skill is the leadership skill. Can you take uh, इनिशिएटिव प्रोएक्टिव हो कि आप खुद इनिशिएटिव्स ले सकते हो Mm. सब चीजों को करने के लिए, बिकॉज इन अ लेटर लाइफ यू विल रियलाइज दैट दोज पीपल ओनली गेट अहेड of you who are bit proactive, and take the initiatives by themselves and actually execute them in a real time. Number one. Number two is that leadership skills get developed because आप बहुत सारे important projects को spearhead करते हो, and Uh-huh. you act as an point of contact, or you as an act as a very important figure into the district or into the your department as your mentee, who is generally IS officer or something. So your word carries weight into the system when you need to get the things done. ये हो गया दूसरा aspect, which you actually get nurtured into the fellowship. And third thing is that problem solving and can do attitude. There are so many complex problems that you actually deal with. You hear a lot of stakeholders simultaneously, तब आपको पता चलता है कि this is the complex exercise, and you actually think about so many options to basically explore the different solutions, right? So वो एक can do Uh-huh. attitude or problem solving attitude आप में develop होता है. Last, and I think I will say the foremost that I have learned through the fellowship is the patience. um, आप कोई भी काम अगर आपको करना है, two P's I will basically follow: patience and perseverance. Because you work with the system, Uh-huh. you are there for a very very You very need short lot of period of time, patience so you need to have a lot and of patience. continuity. Yes, and Yeah. also you need a lot of perseverance also, because आपको आपके मुद्दे को, आपके टॉपिक को, आपके इनिशिएटिव को बार 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 अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ, लोगों के साथ में फॉलो अप लेके एक पॉइंट ऑफ एक्शन बना के फॉलो अप करना ही पड़ता है. So Yes. patience and perseverance, these are the very important qualities which I developed during the fellowship. And believe me, it is helping me a lot in my current profession also, because I regularly deal with the government officials and all. And I exactly know कि किस तरीके से आप गवर्नमेंट लाइजनिंग करते हो, उनके साथ आप किस तरीके से कम्युनिकेट करते हो, हाउ डू यू टेक शेप मेक श्योर दैट स्टेक होल्डर मैनेजमेंट की एक स्किल्स जो है वो आप में डेवलप किस तरीके से हो जाए. नाउ I think I'm somewhere with respect to these skills, and all the credit goes through the 11 month journey of the fellowship. Yeah. Yeah, definitely. And that is really, really very nice. Even I was relating during the discussion that currently I'm working in the MP Nipun, so I'm even feeling the same. Yeah, thank you so much. So, what are the post fellowship opportunities? I mean, during your journey, as you said that you chose one PG diploma, like I think PG course, but like if मान लो अगर आपने वो कोर्स करने का चूज नहीं किया होता तो व्हाट आर द फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज वेर अवेलेबल एट योर टाइम इन 2019 एंड 20 एंड व्हाट डू यू थिंक फॉर नाउ Yeah, क्योंकि 11 मंथ की जर्नी है उसके बाद एस्पिरेंट्स कुछ लोग तो कंसर्न होंगे कि व्हाट आफ्टर द फेलोशिप एंड इवन प्रकाश ने क्वेश्चन भी पूछा है यहाँ पे सो विल टॉक अराउंड इट yeah. I think it's a completely a personal choice, and depending on your personal factors also. If you come from something like, hey, this was a nice fellowship and I wanted to have a academic background in order to support my this journey. uh, बहुत सारे फेलोज ऐसे भी जो है जिन्होंने हायर स्टडीज परस्यू
किया है after the fellowship. I have seen some of the people actually pursuing public policy courses from the international university like Kennedy Forward, Yonklon School of Public Policies and all. Because fellowship ka experience and fellowship ka exposure is something which highlights your statement of purpose for any university in the world. It's Hmm. relevant and it's up to the point. Personally, I did my uh, 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 one of the fellowships because fellowship के बाद मैंने क्यों academic journey pursue की है because I had done my engineering and then I came for then I did a job in corporate, Yeah. then I studied UPSC for 2 years, then did the fellowship. So I understood that somewhere my journey hovers around the social sector slash public policy sector. So I need to do something in order to upskill myself also after the fellowship. That will be a cherry on top approach. That's why I pursued the academic understanding, right? So Hmm. there, so it's completely up to you whether do you want to go into academics or you can choose for the further jobs also. For example, जो big four say KPMG, PwC, EY and Deloitte, these are generally higher much much interested in hiring fellows also because उन लोग के बहुत सारे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं जहाँ पे वो साइन अप करते हैं दे एक्चुअली वर्क विद द गवर्नमेंट ऑन क्रिटिकल एस्पेक्ट्स सो ऑल बिग फोर्स are much more interested. So I have seen some internal posting happening in the fellowship groups also, and the preference is given to the CM fellow specifically because they have extensively worked with the government and they have that knowledge mindset and skill set that we just discussed in the in the Hmm. in the in the past. So the big fours are generally one of the important employer after the fellowship. And also I think social sector organizations are also much much more interested into the fellows क्योंकि ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूशन का एक्सपीरियंस जो है वो डिस्ट्रिक्ट फेलोज को बहुत अच्छे से आ गया होता है. दैट्स व्हाई आई आल्सो बिकम प्रोजेक्ट मैनेजर in the pijam or even the senior project manager in my organization because I had a very strong ground experience working specifically with the education department during my fellowship. So it amplified my journey whatever I was supposed to do. So in the pijam, when I was getting selected, that actually carried a lot of value that I had a relevant experience working with the education department of that, right? So social development sector, some of the fellows have gone into a very niche of it. So कुछ कुछ लोग जो है उन्होंने uh, वो थिंक टैंक्स में भी गए हैं स्पेसिफिकली फ्रॉम द पब्लिक पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू. इकोनॉमिक थिंक टैंक्स हो गए, कुछ पॉलिटिकल थिंक टैंक्स हो गए, वहां पे भी उन लोगों ने डेवलपमेंट किया था. बट their academic journey and their posting into the fellowship was in that niche department also. So कुछ कुछ लोगों ने इस तरीके से फॉलो भी किया हुआ है. So I will say sky is the limit after the fellowship. I don't think so. If you are someone who has a little bit of academic background, has a background of the CM fellowship and actually has created an impact, and you know you have harnessed certain skill and you are articulated and skillful and mindful around what's happening around you, I don't think so you will have any problems after the fellowship. Hmm. uh, Definitely. so please feel free to explore even if you have a good jobs and but you think that you can do something for the greater good because government के साथ में काम करने की जो opportunities रहती है these are very limited ones. You will be in a sort of an elite path on the career. So for example I will give you my example because that is most relevant from the current context is that Uh-huh. um, um, I'm currently age of 31 and I am in the organizations generally जहाँ पे at least 9 to 10 year का experience जो है वो required रहता है for the senior program lead or sometimes certain times at the senior program manager positions also. Why I am currently at my position because जो fellowship का जो experience था that actually counted a lot. So number of years का experience I actually got in that 1 year and then that actually shaped my journey really really well. सो आपके बहुत सारे क्रूशियल ईयर्स जो है वो सेव हो सकते हैं बाय गोइंग थ्रू दिस फेलोशिप. सो टेक दैट चांस इफ यू really want to sort of fast forward your journey also because lot of skills and experience you will be accumulating in just 1 year only. Yeah. Okay. And then your last message to the future cohort as you are alumni of the CM Fellowship. So how they can use this opportunity to shape their career and what mindset they should have during the application and after the selection.
I need to get this if you are someone who is really interested in such kind of fellowship, I need to get this. That a little bit of anxiety and desperateness should be there, because तभी आप उसके लिए strive कर पाओगे. I think the first stage is very crucial. Next two stages are automatic one, and you will be automatically in a gear, because you know you have a 33% probability to get into the cohort, right? 210 का अगर आंकड़ा है, 60 to 70 fellows they will be getting into. 1:3 is a good probability in any to enter in any sort of an opportunity, right? I think first stage is very very crucial. Be mindful about your aptitude exam. That I can definitely do. As much as reference material you can refer to, as much as mindfulness you can have at that time, because no matter what you are going to read, I think at that time आप में जो capability and already आपका जो background है, that is going to matter a lot during the aptitude exam, right? So please be prepared for it a bit, right? uh, Preparation might not help you directly in case of the questions. This is what I will say, right? Because वो बहुत random है. This is C. What preparation helps you to build your confidence कि okay मैंने कुछ relevant पढ़ा भी है, right? जब आप बैठे हुए हैं and when you have a sense, okay, I have done my best and I have actually solved some of the questions, and I hope that I know at least 30-40% of the questions, that adds up a confidence to basically give the exam, right? So I think you should be confident while giving the exam. That is what I will say. So prepare accordingly. First stage is very important. Next two stages are very automatic. You will be in your natural rhythm during the last two stages. Yeah. ओके, सो थैंक यू सो मच शुभम, इतना सारा टाइम देने के लिए और इतना डीपली सबके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, स्ट्रेटेजी शेयर करने के लिए। इस लाइव का गाइड एक ही ऑब्जेक्टिव था कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं ड्यूरिंग ऑल द स्टेजेस ऑफ द सिलेक्शन, वो काफी परेशान रहते हैं कि हम कैसे प्रिपेयर करें। तो शुभम का भी इसलिए इसमें ज्यादा इंटरेस्ट था क्योंकि सेम फेजेस से शुभम भी जा चुके हैं। तो यही उद्देश्य था इस पूरे सेशन का। आई होप ये सेशन आपको बहुत हेल्प करेगा। आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर इन योर कोहोर्ट, जिन्होंने भी इसके लिए अप्लाई किया है उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज लाइव में जितने भी लोग जुड़ पाए उन्होंने क्वेश्चंस पूछे, हमने लिए भी। बट अगर उसके बाद आप ऑफलाइन वीडियो देख रहे हैं और फिर भी आपका कोई रिलेवेंट क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वी विल रिवर्ट बैक एंड इवन आई विल शेयर द क्वेश्चन विद शुभम, ही कैन रिप्लाई यू। ओके गाइस, तो ऑल द वेरी Definitely, बेस्ट। definitely. अच्छे से प्रिपेयर करना। एंड अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए रिगार्डिंग द प्रिपरेशन, कनेक्ट विद स्टेप अहेड इंडिया। हमारे यूट्यूब चैनल पे ऊपर आपको हमारा नंबर मिलेगा, उस पर आप मैसेज डाल सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरी है, क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। मैं शुभम का लिंक्डइन आईडी नीचे कमेंट में डाल दूंगी, आप शुभम से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है एवरीवन? Definitely. One important disclaimer is that these are all opinions which are expressed in my personal and professional purview only. You might find some slight deviation because this is a system. Now CMFP has actually got into a complete system. So कुछ कुछ opinion या फिर कुछ views जो रहेंगे that might not align with that, right? So you might have to be a little bit of mindful around it while going ahead. So please use your own discretion while referring to any of the content of this webinar. Yeah, ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड सेशन कैसा लगा वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, और सेशन को लाइक करना मत भूलना। ठीक है, तो बाय एवरीवन। bye bye. Thank you, Saraswati, for inviting me.